Hello friends, welcome to bioassembly. In this session, I will discuss about the process of glycolysis. First of all, understand the definition of glycolysis. Glycolysis is defined as the sequence of reaction converting glucose to pyruvate or lactate with the production of ATP. ग्लाइकोलाइसिस क्या है? ये एक सीक्वेंस ऑफ रिएक्शन है जो कि ग्लूकोज को पायरुवेट में कन्वर्ट करता है और एटीपी मॉलिक्यूल प्रोड्यूस करता है. साइलेंट फीचर ऑफ ग्लाइकोलाइसिस टेक प्लेस इन ऑल सेल ऑफ द बॉडी एंड द एंजाइम इन दिस पाथवे आर प्रेजेंट इन द साइटोसोमल फ्रैक्शन ऑफ द सेल. जो ग्लाइकोलाइसिस होता है वो सारा सेल, बॉडी के सारे सेल में होता है और इसका जो एंजाइम प्रेजेंट होता है वो साइटोसोमल फ्रैक्शन में होता है. Let's understand the glycolysis. Glycolysis is major pathway for ATP synthesis. ये सब ऐसा पाथवे जो ATP synthesis करता है in the tissue and lacking mitochondria, erythrocyte and cornea lens etc. मतलब कि ग्लाइकोलाइसिस जो ATP प्रोड्यूस करता है सब टिश्यू में, जैसे कि माइटोकॉन्ड्रिया, इरिथ्रोसाइट, रेड ब्लड सेल, cornea lens etc. Glycolysis is very essential for brain विच इज़ डिपेंडेंट ऑन द ग्लूकोज फॉर एनर्जी. ग्लाइकोलाइसिस बहुत ज़रूरी है हमारे ब्रेन के लिए जो डिपेंडेंट है ग्लूकोज पर एनर्जी प्रोडक्शन के लिए. ग्लाइकोलाइसिस दोनों में होता है, एरोबिक और एनारोबिक स्टेट में भी होता है. ग्लाइकोलाइसिस अकर इन बोथ एरोबिक एंड एनारोबिक. एरोबिक मीन्स ऑक्सीजन के प्रेजेंस में और एनारोबिक स्टेट मतलब कि ऑक्सीजन के एब्सेंट में. इन एरोबिक कंडीशन पायरुवेट एंटर द सिट्रिक एसिड साइकिल and undergo oxidative phosphorylation leading to net production of 32 ATP molecule. मतलब कि एरोबिक कंडीशन में क्या होता है कि पायरुवेट एंटर करता है सिट्रिक एसिड साइकिल में और वो उसके बाद वो ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन करता है जिसके कारण टोटल 32 ATP मॉलिक्यूल प्रोड्यूस होता है. और इन एनारोबिक कंडीशन पायरुवेट कन्वर्ट टू लैक्टेट थ्रू एनारोबिक ग्लाइकोलाइसिस. और एनारोबिक कंडीशन में क्या होता है कि पायरुवेट जो है लैक्टेट में कन्वर्ट होता है. ठीक है, लेट्स अंडरस्टैंड द सेलुलर लेवल. ग्लाइकोलाइसिस अकर इन द साइटोसोल ऑफ द सेल. ग्लाइकोलाइसिस जो कि साइटोसोल सेल के साइटोसोल में होता है अंडर एरोबिक कंडीशन. पायरुवेट डिराइव्ड फ्रॉम ग्लूकोज विल एंटर द माइटोकॉन्ड्रिया टू अंडरगो ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन. एरोबिक कंडीशन में क्या होता है कि पायरुवेट जो कि डिराइव्ड होता है ग्लूकोज से और एंटर करता है माइटोकॉन्ड्रिया में और ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन करता है. एनारोबिक कंडीशन में क्या होता है? एनारोबिक कंडीशन रिजल्ट इन द पायरुवेट स्टेइंग इन द साइटोप्लाज्म एंड बीइंग कन्वर्टेड टू लैक्टेट बाय एंजाइम लैक्टेट डिहाइड्रोजिनेज. एनारोबिक कंडीशन में पायरुवेट जो कि साइटोप्लाज्म में ही रहता है और वहाँ पे वो कन्वर्ट होता है लैक्टेट में एंजाइम के हेल्प से, डिहाइड्रोजिनेज एंजाइम के हेल्प से. आई विल रिपीट. एरोबिक कंडीशन में पायरुवेट जो कि ग्लूकोज में जो ग्लूकोज से कन्वर्ट होता है पायरुवेट वो एंटर करता है माइटोकॉन्ड्रिया में और ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन होता है. और बट जबकि जो एनारोबिक कंडीशन में पायरुवेट जो है वो साइटोप्लाज्म में ही रहता है और वहाँ पे वो लैक्टेट कन्वर्ट करता है विद द हेल्प ऑफ एंजाइम लैक्टेट डिहाइड्रोजिनेज. लेट्स अंडरस्टैंड द process of glycolysis step by step. ग्लूकोज मॉलिक्यूल कन्वर्ट होता है ग्लूकोज 6 फॉस्फेट में एंड ग्लूकोज 6 फॉस्फेट फर्दर कन्वर्ट होता है फ्रुक्टोज 6 फॉस्फेट में एंड फ्रुक्टोज 6 फॉस्फेट 1,6 डाइफॉस्फेट में. एंड इन दिस प्रोसेस देन फ्रुक्टोज 6 फॉस्फेट इज कन्वर्टेड टू 2 ग्लिसरल्डिहाइड 3 फॉस्फेट. इन दिस प्रोसेस 2 NAD plus to convert it to NADH and 2 molecule of 1,3-diphosphoglycerate is released to ATP molecule and it converted to 3-phosphoglycerate and 2 molecule of 2-phosphoglycerate is converted to 2 molecule of phenol pyruvate and this molecule release 2 molecule of ATP and then release of 2 molecule of ATP and 2 pyruvate, then it convert to pyruvate. And if pyruvate go to oxidative phosphorylation for aerobic respiration
And when pyruvate is remains state in the cytosol to form lactate, and this with the help of enzyme lactase dehydrogenase in anaerobic condition. Let's understand in detail. Glucose molecule converted to glucose 6-phosphate with the help of ATP molecule breakdown and release one phosphate group and form ADP, and with the help of enzyme hexokinase. And glucose 6-phosphate is converted to fructose 6-phosphate, and with the help of enzyme phosphoglucomutase. And in this process, then fructose 6-phosphate is further converted to fructose 1,6-bisphosphate, and in this process ATP molecule breakdown and form ADP and one phosphate release. And with the help of enzyme fructose phosphofructokinase, and fructose 1,6-biphosphate is converted to glyceraldehyde 3-phosphate, and with the help of enzyme triphosphate isomerase. And in this process fructose 1,6-phosphate is converted to dihydroacetone phosphate. It is interconvertible, that means dihydroxyacetone phosphate. Dihydroxyacetone phosphate is further converted to glyceraldehyde 3-phosphate, and the glyceraldehyde 3-phosphate is converted to 1,3-biphosphoglycerate, and in this process 2 NAD plus phosphate 2-phosphate molecule is formed, and form 2 NADH plus 2 hydrogen molecule is released. And with the help of in this process with the help of enzyme glyceraldehyde 3-phosphate dihydrogenase, then 1,3-bisphosphoglycerate is converted to 3-phosphoglycerate, and this release ATP to ADP is converted to a 2 molecule of ATP. Here ATP ATP is used, and here the ADP is converted to ATP molecule. And 1,3-bisphosphoglycerate is converted 3-phosphoglycerate with the help of enzyme phosphoglycerate kinase, and this phosphoglycerate kinase convert the 3-phosphate phosphoglycerate, and this phosphoglycerate is further converted to 2-phosphoglycerate, and this process release hydrogen H2 water molecule, and with the help of enzyme enolase. I'll repeat. 3-phosphoglycerate is converted to 2-phosphoglycerate with the help of enzyme phosphoglycerate mutase, and phosphoglyceromutase, and this 2-phosphoglycerate is further converted to phosphoenol pyruvate, and this process release 2 molecule of H2O, and with the help of enzyme enolase, and phosphoenol pyruvate is converted to pyruvate, and in this process also 2 ATP molecule is formed, and with the phosphoenol pyruvate is converted pyruvate with the help of enzyme pyruvate kinase. So this process is completed. Glycolysis means glucose molecule is converted to pyruvate, and here 2 molecule of ATP release, here 2 molecule of ATP, total 4 molecules of ATP release, ATP produced in the glycolysis. So this all about the glycolysis. And glycolysis occur in the cytosol of the cell, and thereafter when aerobic respiration occur, then glycolysis glucose is converted to pyruvate, and pyruvate go to the mitochondria where oxidative phosphorylation occur, and if the anaerobic condition, glycolysis converted to lactose, and lactose is remain in the cytosol. So this all about the glycolysis. I hope you understand well. If you like this session, please like, share and subscribe. Thank you for watching.